Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss introduction to academic writing. Academic writing के हवाले से हमारा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एकेडमिक राइटिंग जो है वो क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स या प्रोसेस जो है पहलू एस्पेक्ट्स वो इन्वॉल्व हैं। Academic writing is actually a writing skill which is needed at college and university level. For me, it's quite clear from the name that it is needed at academic level, not at general level. Writing is a productive skill through which we produce information. जब हम writing करते हैं तो हम information को produce करते हैं. Generally, in researches at different levels, school and colleges, when we study a topic or we do some sort of research, so we present our thesis in the form of writing. So that is called academic writing. Academic writing is generally a formal writing style which is used in colleges and universities. Students write academic details. Sorry, students write academic. Students produce academic writings at different levels. These writings involve abstract, mean summary, academic journal article, book report, a conference paper, dissertation, mean research report at PhD level, essay, explication, mean explanatory note, literary criticism, mean studying some writer works, literal works, and then writing an estimation of the work, that is called literary criticism. Research paper, research proposal, textbooks, and thesis. These are all different types of academic writing. Of course, they are not the only. We may have other kinds as well, but these are some of the major academic writing pieces. Now, when we write, when we make academic writing, what we need, what are their characteristics? Generally, academic writing is quite formal, and we have certain aspects to which we adhere, certain characteristics you can say we follow, and certain aspects we must follow to write an academic report or academic thesis or whatever may be. These characteristics involve, the first one is formal tone. What does formal tone mean? Tone is actually the style of writing of the writer. The tone should be formal. We should not use informal conversational language while we are writing. Our writing style should be quite formal, and that should be, you can say, quite serious, not like a light-hearted or conversational tone we generally use in common communication. So the tone should be quite formal. The second thing is precise language, complete language, a language we should use that in which we, you can say, present the writing, the report or the thesis in a quite uniform and quite formal way. So precise language mean we have to be very formal. The language we use for writing should be, you can say, a clear language. We should use such a language that the author must understand. The reader must understand that what the author means. जो मतलब हम रिसर्च लिखते हैं या जो लिखते हैं, तो हम ऐसे लैंग्वेज में लिखें कि जो क्लियर हो, जो कंप्लीट हो और पूरी कम्युनिकेशन के लिहाज से वो जामे हो, कंप्लीट हो, जिससे पूरा मतलब लिया जा सके. दैट इज़ द सेकंड करेक्टरिस्टिक ऑफ academic writing, precise language. सेकंड वन इज पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जनरली पॉइंट ऑफ व्यू वो है जिस नुक्ते नज़र से राइटर लिखता है कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने लिखे है ये मेरे है या ये किसके है. जनरली वी शुड यूज़ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू.
we have, you can say, two person point of views. That is the first person, in which we use I, and we use we, etc. But we should use the third person. So mean third person point of view mean that personally you should not get involved in the opinions and sorry, in the information. What evidences are produced, they should be written quite in passive form, not in active form. So we, when we write something actively and we say I saw, I observed, I did that, so that should not be that. We should use passive form. It was observed, ये देखा गया, ये नोट किया गया, यहाँ पर ये बात आई, यहाँ पर हमने ये देखा, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मिले. सो वी शुड राइट क्वाइट इन पैसिव फॉर्म. पॉइंट ऑफ व्यू वो है जिस नुक्ता नज़र से हम रिपोर्ट लिखते हैं, जिस नुक्ता नज़र से हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं. सो वाइल राइटिंग एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी लेवल, we should be quite impartial and we should not impose our personal opinion in the writing. The third thing, next thing is research focused. Research, what does it mean? It means when we write any piece of academic writing, we must, you can say, report the research results, the findings of the result. We should, you can say, the findings of the research. We should not say, we should not go away from the topic. We should not talk something like we should not talk about something which is not the field of our research. All time we should have the question of research in our mind. हम सारा वक्त जब ये काम लिखते हैं, रिसर्च लिखते हैं, तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, किस टॉपिक पे हमने रिसर्च किया और किस टॉपिक पे हमें इंफॉर्मेशन मिले, और हम वो इंफॉर्मेशन एक रिपोर्ट की शक्ल में लिखते हैं. सो दैट इज़ व्हाट रिसर्च फोकस्ड. रिसर्च फोकस्ड का मतलब है दैट वी शुड wholly and solely concentrated on the question before us. That what's the question, to which question we are finding the answer. So that should be our main concern. um, Next thing is organization. Organization mean that we should not write the ideas in jumble form. We should write the ideas in quite organized form. There should have coherence, there should have proper connectivity, there should have a proper organization of our writing. We should discuss the points and the research quite categorically, and we should have a proper organization of the writing. We will study that what does organization mean and how we can bring organization in our writing. Generally, sources citation. Next topic is, that is source citation. In research, we make references. Mean we take information from different secondary research sources. We study different books, and then we study different journals, and from those articles, journals, we collect information. So the books are whatever research material we used in the research, and about which we are going to write. We must cite them. Cite mean हवाला देना है. जो जो किताबें जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है और हम उन इंफॉर्मेशन को अपनी रिसर्च का हिस्सा बना रहे हैं, तो उनका हमें रेफरेंस देना चाहिए. एक एंड में एक बिब्लियोग्राफी लिस्ट देना चाहिए कि उस लिस्ट में लिखा हो कि ये किताबें हमने पढ़ी और ये इंफॉर्मेशन हमें इन बुक से, इन आथर्स के बुक से मिले हैं. तो ये लाजमी है, इट इज़ मस्ट इन एकेडमिक राइटिंग. अच्छा, अगर हम ऐसा न करें तो क्या हो सकता है? दिन वी कैन फेस प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये है कि हमें प्लेजरिज्म जो है उसका ख़तरा हो सकता है. प्लेजरिज्म का ये कि हमने किसी को नकल किया है, किसी के एकेडमिक या रिसर्च वर्क को हमने चोरी किया हुआ है. सो दैट वी शुड मस्ट अवॉइड इट. सेकंड, ये भी हो सकता है कि लीगल एक्शन भी का सामना पड़ सकता है.
जिनका हम काम इस्तेमाल करते हैं बग़ैर रेफरेंस के या बग़ैर इजाज़त के, तो वो हमारे ख़िलाफ़ जो है अगर हम इसको पब्लिश करें तो वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो सोर्स ऑफ साइटेशन जो है ये मस्ट है कि हम साइट करें कि कहाँ से किन किताबों से हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है, ताकि वो बात हमारी रिसर्च का हमारे से ताल्लुक़ ना हो, बल्कि असली आथर के साथ इसका कनेक्शन बरकरार रहे। Second thing is academic. Next thing is academic writing structure. जो हमने पहले बात की थी कि organization of essay और organization of writing work, तो हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे उस रिटर्न वर्क को। हम जनरली आम तौर पे तीन सेक्शंस जो होते हैं, देयर आर थ्री सेक्शंस इन विच वी ऑर्गेनाइज आवर एकेडमिक राइटिंग। First section is introduction, the second section is body, and the third section is conclusion. इंट्रोडक्शन में हम जनरली अपने काम को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक जर्नल बैकग्राउंड बनाते हैं और टॉपिक सेंटेंस इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि जिसमें हमारा टॉपिक के हवाले से जो है वो मेन आइडिया होता है। बॉडी में सारी डिटेल्स होते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिटेल्स जो है वो हम ऐसे में देते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। In the introduction, you must grab the reader's attention and identify the thesis of the paper. इंट्रोडक्शन में हम जब बात को शुरू करते हैं तो ज़रूर हम ऐसे अंदाज में शुरू करनी चाहिए कि रीडर को एक क्लू मिले कि वो समझे कि क्या बात है, किस टॉपिक पे बात हो रही है। When a reader studies or reads the introduction section, he clearly gets an image of the whole essay or the whole piece of work in his mind. So, in introduction, you can say you must consider these options. You can write a statement of the research question, your declaration of the work's primary focus, that ये जो काम मैं लिख रहा हूँ इसका main focus किस topic पर है, मौजू क्या है इसका, relevant quote from a famous work or person, किसी खास बंदे राइटर का या बुक का आप कोई कोट लिख सकते हैं जो वन कोट आपकी पूरी वर्क को एक्सप्लेन कर सके। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक आप बयान कर सकते हैं। एंड ऑप्शनल जो है ऑपरेशनल डिफिनीशन आर इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द वर्क। ये सारी इनमें से एक दो या सारी जो है आप अपने इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हैं। बॉडी इज़ द नेक्स्ट सेक्शन एकेडमिक वर्क्स। इसमें जनरली क्या होता है, बॉडी में मुख्तलिफ पैराग्राफ्स होते हैं और इसमें जो है मेन डिस्कशन बॉडी में होती है। वी राइट द डिटेल डिस्कशन ऑफ आवर एकेडमिक वर्क इन द बॉडी. This is the main part of the work. The paragraph must be clearly written and arranged in logical order. For example, it could be arranged chronologically or in order of importance. So first we write, that at first we did that, we studied that, we found that, then next, second. So we write different paragraphs. But the paragraphs must have logical connection and connectivity with one another, that the body must be well organized. So you can read it. Now, the last and final section in the academic writing is the conclusion. Conclusion is actually a clue for for the reader, from the writer, that the writer gives an ending point to the reader, that now I'm going to wind up my topic. The writer comes to a conclusion, comes to an ending point, and he writes what his conclusion mean the ending information. Conclusion, you can say it is simply a summary of the written work in few lines, in few sentences. Conclusion can also refer further information like suggestion for the readers for further studies. So conclusion is the ending point of the work of the academic written work. I hope you understand. Thank you.